Yeah, very warm good evening to all of you for joining this session on uh, trading strategies for uh, especially on hedging concept. We have with us Mr. Samuel Babu from SEBI. He's AGM in SEBI, based at Hyderabad location, and Samuel sir is working with SEBI for last 10 years. Uh, Samuel sir will discuss about financial markets with special special about with respect to commodity futures. Over to you, Samuel sir. Yeah. Thank you, Mr. Roy. Hi, hello everyone. I'm Samuel Babu. I'm an assistant general manager with SEBI. I'm presently posted at Hyderabad local office. Today, this evening, I wish to take you through a brief introduction of what is a commodity and what is a commodity derivative and how SEBI is regulating commodities markets. Okay. Uh, Let us start. What is first of all, we have to know what is a commodity. And if you commodity is if you can touch anything and you see it, feel it, or eat it, it can be a commodity. Commodities are all around us, but commodities, not all commodities are traded. So we can go through that. Before that, what is a commodity market? Uh, as all definitions go, a commodity market is a place where buyers and sellers of commodities gather to buy and sell the raw materials used in products bought and sold in the open market. So commodity is anything, any product which we can feel it, we can touch it, or we can eat it also. Probably it can be a commodity. So in terms of regulating commodities market. So next slide, please. If you can see, in Indian financial sector, we have got regulators to regulate markets. Like if you see, Securities and Exchange Board of India deals with securities and regulating securities markets. Okay, and commodities has been brought under the definition of securities, commodity derivatives. Okay, if you see banking, Reserve Bank of India is a regulatory body for banking sectors. For insurance sector, IRDA, Insurance Regulatory Development Authority of India, is a regulatory body. Similarly, for pension funds, it is PFRDA. So why there should be financial regulators? So for any market to be fair and just, there should be a regulatory body. So for commodities and equities market, derivatives market, SEBI is a regulatory body. For banking, similarly, is a Reserve Bank of India, insurance, IRDI. These are the financial sector regulators in our country. Can you go to the next? The spot market, I have to add this point. Spot market of commodities is controlled by the local state governments. If you take earlier for commodities, earlier there was a body, regulatory body of Government of India, that is Forward Markets Commission. Earlier it was a separate entity, separate body. So it got merged with Securities and Exchange Board of India in the year 2015. Thereby, all these commodities, commodity derivatives are brought under SEBI ambit. We go to the next slide, please. So how does this regulatory framework works? So SEBI, as a regulatory body of Indian securities markets, was established in the year 1992. The mandate which was accorded to SEBI is to protect the interests of investors. For SEBI, every investor is equally important. Every investor's interest has to be safeguarded. And we are also being given with this responsibility of promoting the development of securities markets and regulating the securities markets. The moment if anyone comes across the securities market, share market, the stock market and all, people have got different perceptions towards the markets. Some may believe it, some may not, because the trust, I believe trust has to be built up among the investors. So the moment share market comes into the picture, or it comes among our conversations,
So goal, I mean, like people have different type of perceptions or negative impressions also. So SEBI has been given with that baton of promoting the development of securities markets, to build the confidence among investors, to regulate the securities markets. So if you to see the regulatory framework, SEBI has been robust. SEBI has been very instrumental in building that confidence in securities markets. Please next go to the next slide. So, as I said, what is a derivative? Contract derives its value from the underlying commodities. Derivatives is the underlying the commodity derivatives is a type of contract wherein it derives its value from the underlying commodities. In our country, the central government has notified 91 different types of commodities where it can be tradable, but 40 commodities are currently now being traded. Next slide, please. So these the basic differences between a commodity market and an equity derivative market, commodity derivative market and equity derivative. This is the basic differences. Like the underlying in commodities, commodity is what, as we discussed. Okay, it's a perishable one. It perishes. Whereas in equity derivative, it's a continuing thing. In underlying market of commodity derivatives is fragmented and price opacity, because the price is not clear. Whereas in equity derivative market, it's a very organized market, and we also know the price will be known. Underlying supply is estimate based, not exactly certain or very certain. The settlement of in commodity derivatives markets is physically handled goods, whereas in equity derivative it is demand settled. It is also politically high sensitive, whereas in equity derivative market it is a medium exposed to political sensitivity. The participation in commodity derivatives markets is sophisticated level is very low. In equity derivative markets, it is a bit matured. So before going to the actual concept of how commodity derivatives can help Indian farmers, we'll also discuss on that. The thing is, commodity, any derivatives are used for to derive the value. And in hedging is one such concept where you can lock your price, where you can protect yourself from adverse price movements. Okay, for benefits of this exchange traded commodity, the very purpose of commodity derivative is, suppose for a farmer, okay, what he is sowing some soya, okay, in the month of January, and the harvest is in April. So the thing, commodity market gives the exposure to any farmer and the national level. May, if you are, suppose if you take the example of NCDEX, there the price of a commodity can be known to a farmer who is in rural area also. Okay, thereby his price adverse movements can be logged. That is what is hedging. Hedging is protecting your adverse movement of pricing. So the benefits of exchange traded commodity derivatives is, there you can get to know the price of your produce, and the settlement is guaranteed, and the transparency of the price movement, and also the liquidity. So these are the 5 benefits of exchange traded commodity derivatives. So the very basic purpose is to hedge your produce, because nowadays, because of this adverse price movements of commodities, you know, the price needs to be logged for any farmer, so that the uncertainty in adverse movements also can be addressed. So next slide, please. So if you see how it helps in terms of price discovery, so the advantages of price discovery, you can receive the farmers or whoever enters into the contract on national level exchange. The benefit is he will receive price alerts through SMS, or he will have an enhanced bargaining power. Uh, so the main thing is it reduces the dominance of middlemen, agents or commission agents, where earlier, because of their innocence, farmers get duped. So that
that is avoided. That sort of exploitation, I can say, it will be erased in terms when you deal with exchange traded commodity derivatives. Next slide. So this is how you can previous slide. So if you see, this is a pictorial representation of how price risk management is. So since this farmer has logged his price, he need not worry. So, and one more concept has come last 3 to 4 months when they introduced options also. So if you take a put option, an option, put and call options are there. Like a call option is a right to buy and a put option is a right to sell. So if a contract is, if you are hedging your produce, which is adjoined by getting a locking a price option also, put option, there you will be having a right to sell. So I would like to bring this spot market also into your notice. There is a spot market where it is equivalent to a cash market where you can go immediately and buy. Okay, so if you enter in, if you get into that put option also, you will have this option of whether to honor that contract, or either you, if it is more beneficial in the spot market, you can go and sell it in the market. So the price risk you can manage in that terms. A contract supported by one put option also will be very helpful for a farmer. So there should not be a situation that you have not logged into the log the price upfront before sowing, and there if on the day of contract expiry of the contract, if you can if the price of the spot price is more, or the demand for that is more, or the supply has come very like huge. So this is the reason where you have to hedge your produce or hedge your position. So this is how is a pictorial representation of how this farmer has logged his price. Thereby, he has avoided the losses. Okay, next slide, please. These are the exchanges, national level exchanges dealing into commodities derivatives markets: NCDEX, MCX, ICEX, and NSE, BSC. Next slide, please. So these are the different stakeholders of commodities markets also. There's a clearing corporation where it guarantees the settlement, and settlements happen, and warehouse service providers, repositories, quality assets, or testing labs will be there. These are other stakeholders which are involved in commodities derivatives markets. Next slide. So how clearing and settlement takes place in commodity derivatives markets? So this clearing corporation acts as a bridge between the buyer and seller. Okay, it guarantees the settlement. If you normally, if you take an example of a farmer, so the next slide will have that pictorial representation. You can see that. So these clearing corporations acts as a bridge between the buyer and seller, and it ensures the settlement guaranteed. Next slide. So these uh, warehouses ensures that stocking of goods are can be placed there, and their value, they will ensure that the value of their produce is maintained properly, and delivery also they will facilitate. So you have to ensure that the warehouse is registered with Warehouse Development Regulatory Authority body, and that the warehouse service provider it should be empaneled with this clearing corporations. So next slide, please. These are the different types of agri commodities traded in Indian commodities markets. So there different types of commodities which are traded. Next slide, please. There are also non-agri commodities like gold, silver, copper, zinc. All these are all non-agri commodities where the trading happens. Next slide, please. So if you see, this is the procedure for depositing goods in the warehouse. Suppose if you are a seller, so you have to collect or aggregation of goods and sorting as per the contract specifications, where you have to book a warehouse space, and you have to arranging for transport. Then you have to ensure that the goods are deposited in exchange provided warehouse. There, this quality testing and certification needs to be procured by an SIR.
So they will generate a receipt which you submit to commodity exchange. So this is how depositing of goods in warehouses takes place. Next one. So this is how a commodities derivative system in brief is. There will be hedgers. So hedgers, speculators, arbitragers, brokers or trading members. This is how this is the brief of commodity derivatives markets. Suppose what a hedger does. Hedger, what he does is he will try to protect himself from the uncertain risk by locking into the price, like farmers, farmer produce organizations, processors, importers, exporters. These are all can do that hedging, hedging. They can use this concept called hedging, wherein they protect themselves from the adverse price movement. Like suppose farmer, as I told you, if he's sowing soya in the month of Jan, and he can better know if he deal with a national exchange, nationwide exchange, where he will get to know because the price movement, how the price and all. Because in the rural area, because of the lack of technology or lack of this price information, there is a possibility that they may get duped or they may get cheated. So the deal in this type of dealing with nationwide commodity markets, they will get to know how the price for their produce is. Thereby, if they hedge their produce, they will guard themselves from the adverse price movements. Speculators is something in anticipation of a profit, and in that uh, the price of that particular, they expect that the price will go up, or so that they can get profit out of that. So mostly it is done by these day traders, position traders, market makers. So these do this technique of speculators. Whereas who are arbitragers is they will take contra positions, like buy and sell in two markets. Out of it, they can earn some sort of profit by exploiting price difference between two markets. Different broking and broker members or trading members will be in this market, where they can trade on his own account or for his client accounts. Next slide, please. So in India, futures, options on goods, index futures, these are the derivatives which are traded in currently in India. Next one. So delivery logic for future settlement is compulsory delivery if you are in the contract till the expiry of the contract. Okay. So there should be it will be mandatory to compulsorily deliver your goods. Okay. And seller's option is, it's in the interest of, I mean, like seller has an option to deliver, either to settle it in physical delivery or cash settled. So intention matching is like what is your interest, like whether you want a physical delivery or cash settled. Next one. So this is criteria of commodity for a derivatives trading. Could you please go to the next slide? Next one. Next. Previous one. No. So these are the features of a contract specifications. I believe NCDEX will give more thoughts into this, how a contract and all is, and the specifications. Okay, Mr. Rai. Mr. Rai. Yes, sir. Yes, sir. Mr. Rai, I believe you can take them forward in information providing. Okay. Okay, sir. Yeah. Thank Okay. you, Thanks. sir. Thank Thanks. you. Thanks a lot for giving this valuable information on commodity derivatives. Thank you very much. Yeah. Here onwards, we will be talking about concept of hedging with respect to trading strategies. Okay. Yeah. Talking about trading strategies, already sir has
explained or sir has discussed about these three kind of trading strategies. So we will focus on hedging. Already Samuel sir has discussed about arbitrage thing also. So arbitrage is the basically a process of buying and selling of a same derivatives or same commodity in two markets. Like buying from a market where the prices is low and selling it in a market where the prices is high. So these kind of arbitrage things do exist in the real world, but as the market is maturing, the arbitrage level is getting reduced. If you are talking about some 5 years or 10 years back, futures market or commodity spot market and futures market, there was a lot of uh, arbitrage opportunity, and the quantum of arbitrage at that point of time was quite higher. But since the gradually markets are developing, or the level of participants is getting mature towards maturing, so the arbitrage level in terms of percentage that is getting reduced. So what is hedging? Hedging is the practice of taking a position in one market to offset and balance against the risk adopted by assuming a position in contrary or opposite market. Basically, hedger is someone who is not willing to take the price risk at his own. He want to transfer his price risk to somebody else. So in futures market, someone who do have their price risk with him, like if he's a primary producer of the any commodity, or he's a end consumer or a processor of particular commodity, so they do have price risk associated with that particular commodity, and they do want to transfer that price risk to someone else, so they do take a opposite position in futures market. Like, take an example, if there is a one soya farmer, he is anticipating soybean harvest in the month of October and November. So he because in he is going to get his produce in the month of October November. So he sell sell his position in futures market. He take a short position. By taking that short position, he locked his prices. So that price risk is transferred from farmer to someone else. Maybe some arbitrager has taken that price risk, or some speculator has taken that price risk. अगर हम लोग हेजिंग के टाइप्स की बात करें, तो हेजिंग में दोनों टाइप का हेज हो सकता है. लॉन्ग हेज भी हो सकता है, शॉर्ट हेज भी हो सकता है. बेसिकली पार्टिसिपेंट्स अगर अपना फ्यूचर्स के अंदर में एक लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, तो दैट इज अ लॉन्ग हेज. और अगर पार्टिसिपेंट्स के पास में कोई स्टॉक है, लेट्स से कोई कोई एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो कि कमोडिटी का अपने पास में स्टॉक किया हुआ है, बट उसके साथ में उसका वो प्राइस रिस्क अपने पास में नहीं रखना चाहते, तो वो अकॉर्डिंगली उतना ही क्वांटिटी का फ्यूचर्स मार्केट के अंदर में एक सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे और शॉर्ट पोजीशन लेंगे, तो दैट इज अ शॉर्ट हेज. बेसिकली शॉर्ट हेज के अंदर में रिस्क ये रहेगा कि अगर उस एमएनसी के पास में कमोडिटी रखा हुआ है, उसके प्राइसेस बढ़ते हैं तब तो ठीक है, प्राइसेस अगर डाउन साइड पे जा रहे हैं तो दैट इज अ रिस्क. उसमें शॉर्ट हेज लेंगे कि अगर प्राइसेस नीचे जाते हैं तब वो फ्यूचर्स मार्केट से कॉम्पनसेटेड हो जाएंगे. उसके ही अपोजिट में अगर प्राइसेस
साइड जा रहे हैं तो वहां पे एक लॉन्ग हेज का पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पर दिखाया हुआ है कि लॉन्ग हेज, जस्ट मिनट, सॉरी, ये एक एग्जांपल है लॉन्ग हेज का, जहाँ पे कि आप देखेंगे कि लेट से एबीसी एबीसी लिमिटेड एक एक्सपोर्टर है ग्वारगम का, और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं जो कि ग्वारगम एक्सपोर्ट करना है उनको मंथ ऑफ जून 2020 में एट द रेट ऑफ 6,500 रुपीज पर क्विंटल। और करंट प्राइसेस जो जो हैं वो जून 2020 एक्सपायरी के लिए 6,400 के प्राइसेस हैं। देन उनके लिए ये एक्सपेक्टेड रहेगा कि अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पे सॉरी, अगर एबीसी लिमिटेड को ये लग रहा है कि इसके प्राइसेस जो है आगे जाके और बढ़ सकते हैं, बेसिकली कैसा है कि उनने एक अपना कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है एक्सपोर्ट के लिए, तो उसके लिए उनको मटेरियल की ज़रूरत होगी। आइदर वो स्पॉट मार्केट से इस मटेरियल को खरीद के अपने पास में रख लें, या फिर आ, कोई अपना ऐसा एग्रीमेंट करें जहाँ पे कि वो प्राइस लॉक कर सकें। तो उसके लिए उनको एक फ्यूचर्स मार्केट जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, और वो वहाँ पे जाके अपना प्राइस लॉक कर सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने जून फ्यूचर्स बाय कर लिया 6,400 रुपीज पर क्विंटल में। ऑलरेडी उनका जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज 6,500 के लेवल पे है, तो वहां पे उनके पास में एक प्रॉफिट मार्जिन मिल गया 100 रुपये, 100 रुपीज पर क्विंटल का। तो देखिए अभी इसमें दोनों सिनारियो दिखाया गया है कि अगर प्राइसेस अपसाइड में जाते हैं, क्योंकि मार्केट मार्केट कैन बिहेव इन अ बोथ डायरेक्शन, आइदर मार्केट कैन गो अप और मार्केट कैन गो डाउन। तो हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं जहां पे कि प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं, लेट से फ्यूचर्स का उन्होंने जो जो बाइंग प्राइस है उनका 6,400 रुपीज है, और जब वो जून में के अंदर में अपना जब उनको एक्सपोर्ट करना है क्वांटिटी को, उस समय अपना पोजीशन जो है फ्यूचर्स के अंदर में स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो प्राइसेस उस समय से 7,000 का लेवल है। और हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज अ परफेक्ट कन्वर्जेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर्स मार्केट, तो उस समय भी प्राइस स्पॉट मार्केट के भी 7,000 के लेवल पे है। तो बेसिकली उनका जो सेल प्राइस था दैट दैट वाज 6,500 रुपीज का लेवल। तो उनको जो जो उन्होंने फ्यूचर्स के अंदर में 6,400 रुपीज पे जो बाय किया हुआ है, तो अफेक्टिवली जब उसको 7,000 के लेवल पे सेल ऑफ कर रहे हैं, तो वहां से उनको 600 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम स्पॉट मार्केट के अंदर में, क्योंकि उस समय पे स्पॉट मार्केट जो था वो 6,500 के लेवल पे है, वहां पर 500 रुपए का प्राइस बढ़ा तो उनको वो 500 रुपए का स्पॉट मार्केट में लॉस हुआ। तो अफेक्टिवली जो उन्होंने पहले अपना प्राइस लॉक किया था विद प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 100 रुपीज पर क्विंटल, वो उनके पास में इंटैक्ट रहा। सेम डायरेक्शन में अगर प्राइसेस नीचे के साइड पे जाते हैं, तो बेसिकली उन्होंने जब लॉन्ग हेज किया हुआ है तो उनको फ्यूचर्स मार्केट के अंदर में लॉस होगा। लेट से कि वो प्राइस 6,000 रुपीज के लेवल पे आ जाता है फ्यूचर्स भी और स्पॉट भी, तो फ्यूचर्स मार्केट के अंदर में उनको 400 रुपए का लॉस होगा। और बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम स्पॉट मार्केट के अंदर में उनको 500 रुपए सस्ता मटेरियल मिल रहा है, तो अफेक्टिवली उनके पास में जो नेट रियलाइजेशन है वो 100 रुपीज प्रॉफिट में ही है। सेम एग्जांपल अगर हम लोग शॉर्ट हेज का देखें, तो
अगर वही एबीसी लिमिटेड जो ग्वारगम के प्रोसेसर हैं, उनके पास में लेट से फिनिश स्टॉक रखा हुआ है ग्वारगम का, जो उनके पास में नहीं बिक पाया है, और उसका इन्वेंट्री कॉस्ट उनके पास में 6,300 रुपीज का लेवल का है, और करंट फ्यूचर्स प्राइसेस जो है वो जून एक्सपायरी के लिए लेट से 6,400 रुपीज का है। तो अगर वो लोग अपना जून का फ्यूचर्स सेल करते हैं तो अफेक्टिवली उनको एक 100 रुपीज क्विंटल का प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन अगर मार्केट उसके बाद में लेट से बढ़ जाता है, तो क्योंकि उन्होंने अपना जो हेज पोजीशन है वो शॉर्ट हेज लिया हुआ है, तो फ्यूचर्स मार्केट के अंदर में उनको लॉस होगा। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मार्केट बढ़ गया है, तो स्पॉट मार्केट में जो उनके पास में अनसोल्ड फिनिश स्टॉक था, उसका प्राइसेस उनको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट में उनको 600 रुपए का लॉस हो रहा है, और स्पॉट मार्केट में जब प्राइस बढ़ रहे हैं 700 रुपए का फायदा हो रहा है, तो अफेक्टिवली 100 रुपए का उनको प्राइस बेनिफिट मिल रहा है। अगर ये प्राइस डाउन आते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में उनको फ्यूचर्स में उन्होंने शॉर्ट पोजीशन दिया हुआ है, तो प्राइस डाउन आने से फ्यूचर्स मार्केट उनको फायदा देगा, बट स्पॉट मार्केट में उनका जो 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 फिनिश स्टॉक है उसका वैल्यू उनको कम मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे कि 6,400 रुपए से 6,000 का लेवल आया, तो फ्यूचर्स मार्केट के अंदर में उनको 400 रुपए का फायदा हुआ, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनकी जो फिनिश स्टॉक था, जिसका वैल्यू 6,300 रुपीज का था, उनका इन्वेंट्री कॉस्ट, वो 6,000 में बिक रहा, तो वहां पे 300 रुपए का उनको लॉस हुआ। तो अफेक्टिवली फिर भी उनको 100 रुपए का बेनिफिट मिला। तो बेसिकली इन दोनों एग्जांपल में आपने देखा कि चाहे लॉन्ग हेज हो या शॉर्ट हेज हो, जो जो मार्जिन हैं, जो भी हेजर है, वो अपना जो मार्जिन को वो टारगेट करके अपना पोजीशन ले रहा है, वो मार्जिन उसका इंटैक्ट रहता है इन आइदर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, कि वो मार्केट अपसाइड जाए या डाउन साइड जाए, उस मार्केट मूवमेंट का उनको कोई वरी नहीं रहता है। अगर हेजिंग के एडवांटेजेस की बात की जाए, तो ये 3 टाइप के हेजिंग के एडवांटेजेस हैं। बेसिकली मार्केटिंग पीरियड एक हेजिंग हेजिंग स्ट्रैटेजी में जब एक हेजर जाता है, तो उसके लिए मार्केटिंग पीरियड स्ट्रेच या लंबा हो जाता है। फिर साथ में इन्वेंट्री की वैल्यूज को प्रोटेक्ट करता है हेजिंग। जैसे हमने पिछला एग्जांपल में देखा कि अगर एबीसी लिमिटेड के पास में इन्वेंट्री रखा हुआ था अनसोल्ड, तब भी उसको उसका जो जो मार्जिन था वो इंटैक्ट था लेने के बाद। और थर्ड बेनिफिट है कि हेजिंग हेजिंग प्रैक्टिस यूज करने के बाद में एक मैन्युफैक्चरर या प्रोसेसर जो है, वो फॉरवर्ड के अंदर में अपना काम कर सकता है, कि अगर उसको आज से 3 महीने बाद का अगर वो फिनिश गुड के उसके पास में बायर्स हैं, तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो उनको 3 महीने बाद का फिनिश गुड का प्राइसिंग लॉक कर सकता है, और साथ में साइमल्टेनियसली रॉ मटेरियल के लिए फ्यूचर्स मार्केट में अपना एक लॉन्ग पोजीशन ले सकता है। तो बेसिकली वहाँ पे कह सकते हैं कि एक प्रोसेसर या मैन्युफैक्चरर जो है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को बाय अडॉप्टिंग और यूजिंग हेजिंग टेक्निक्स वो अपना कर सकते हैं। अभी बात आती है कि अगर हेजिंग इतना ही बेस्ट थिंग है, तो हेजिंग हर कोई क्यों नहीं करता है, हर एक प्रोसेसर, हर एक मैन्युफैक्चरर या हर एक प्रोड्यूसर क्यों नहीं करता है, और उसके क्या लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस की बात की जाए, तो पहला सबसे बड़ा लिमिटेशन है इसमें बेसिस रिस्क, और दूसरा लिमिटेशन है कि इसमें एक रोल ओवर कॉस्ट। ये दो चीज एक लिमिटेशंस है हेजिंग कॉन्सेप्ट के अंदर में या हेजिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर में। और अगर हम लोग बात करें, तो हेजिंग से सिर्फ रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, बट इट कैन नॉट एलिमिनेट 100% रिस्क, बिकॉज बेसिस रिस्क जो है दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द, हम लोग अभी आगे की स्लाइड्स में देखेंगे अबाउट बेसिस रिस्क, बट विद रिस्पेक्ट टू हेजिंग और हेजिंग टेक्निक, basis risk the biggest limitation for any hedgers. तो अगर बात करें तो व्हाट इज बेसिस,
This is nothing but that is a price difference between spot market and futures market. बेसिकली एक हेजर जो है वो अपना स्पॉट मार्केट के प्राइसेस को फ्यूचर्स मार्केट के अंदर में लॉक कर रहा है, अपनी रिस्क को, स्पॉट मार्केट की रिस्क को, स्पॉट प्राइस रिस्क को फ्यूचर्स प्राइस के साथ में अपना रिस्क को लॉक करता है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, प्राइस डिफरेंस है, स्पॉट माइनस फ्यूचर्स दैट इज बेसिस, अगर ये चेंज नहीं होता है तब तो किसी हेजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा था, तो हमने वहां मान के चला हुआ था कि देयर इज अ परफेक्ट कन्वर्जेंस ऑफ स्पॉट एंड फ्यूचर्स मार्केट। तो हम ये मान के चल रहे थे कि अगर बेसिस भी है, या तो बेसिस वहां जीरो है या फिर बेसिस कांस्टेंट है। अगर ये जो जो नंबर है स्पॉट मार्केट, स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर्स प्राइस, तो इसको हम लोग ओवर बेसिस बोलते हैं। अगर ये नेगेटिव नंबर है तो इसको अंडर बेसिस बोलते हैं। बेसिकली अगर हम जो एग्जांपल देखे हुए थे, अगर आप इसको रिलेट करें एबीसी लिमिटेड के पास में, अ, अगर उन्होंने अपना स्पॉट मार्केट का प्राइस रिस्क को फ्यूचर्स के साथ में लॉक किया हुआ था या हेज किया हुआ था, तो वहां पे एक रिस्क ये है कि अगर स्पॉट मार्केट फ्यूचर्स मार्केट के रेफरेंस में डिफरेंटली बिहेव करता है तो देयर इज अ बेसिस रिस्क। अभी एक और चीज रहता है इसमें, हम लोग बात करें कि बेसिस रिस्क भी है। अगर हेजिंग टेक्निक यूज नहीं कर रहा है कोई एंटिटी या कोई प्रोसेसर या प्रोड्यूसर, तो दे आर इनटू अ प्राइस रिस्क, कि पूरा प्राइस रिस्क अपने पास में है, उनके पास में। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम बोल सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस रिस्क इज बिगर देन द बेसिस रिस्क। लेकिन अगर ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर कि बेसिस रिस्क प्राइस रिस्क से ज्यादा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में या उस जगह पे हेजिंग एडवाइजेबल नहीं रहेगी, अगर बेसिस रिस्क ही प्राइस रिस्क से ज्यादा हो जाए तो। पर हम लोग बात के एग्जांपल्स में देखेंगे, और प्रैक्टिकली फिजिकल मार्केट्स के अंदर में हमेशा बेसिस रिस्क का जो मूवमेंट है, प्राइस रिस्क, प्राइस के बेसिस का जो मूवमेंट है वो प्राइस के मूवमेंट के कंपैरिजन में काफी कम होता है। तो बेसिकली थ्रू हेजिंग इट इज एडवाइजेबल कि वो प्राइस रिस्क को लॉक कर लें अपना। फिर भी साथ में जो भी हेजर है उसको बेसिस के मूवमेंट्स को भी ट्रैक करना पड़ेगा कि वो कौन से स्पॉट मार्केट में उनका कमोडिटीज है, उस मार्केट का बेसिस फ्यूचर्स के साथ में कैसा रहता है, हिस्टोरिकल पैटर्न क्या है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव टू कीप इन माइंड फॉर टेकिंग अ हेज पोजीशन। बेसिस में दोनों चीज हो सकता है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस एंड वीकनिंग ऑफ बेसिस। तो बेसिकली स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस कब क्या कहलाएगा कि स्पॉट मार्केट जो है ये ज्यादा बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू फ्यूचर्स मार्केट, और स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस जो है वो कह लीजिए कि शॉर्ट पोजीशन के लिए, शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट हेज वालों के लिए बेनिफिट करेगा या उनको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। वहीं पे वीकनिंग ऑफ बेसिस में बोल सकते हैं कि हम की फ्यूचर्स मार्केट जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है कंपैरिजन टू स्पॉट मार्केट। और बेसिकली अगर बेसिस वीकन हो रहा है तो वहां पे लॉन्ग फ्यूचर्स, अगर किसी ने पोजीशन ले रखा है, लॉन्ग हेज पोजीशन ले रखा है, तो उसके लिए एडवांटेज रहेगा ये। हम लोग इसके एग्जांपल्स अभी देखते हैं। लेट्स से कि ट्रेडिंग डे पे स्पॉट मार्केट है 6,500 रुपए, फ्यूचर्स मार्केट भी है 6,500 रुपए। उस पॉइंट ऑफ टाइम में बेसिस है 0 रुपीज। अगर जब ट्रेडिंग प्लस 30 डेज में अगर हम लोग बात करें तो स्पॉट मार्केट लेट से 6,500 से पहुंच गया 7,000, और फ्यूचर्स प्राइस जो है वो 6,500 से पहुंची 6,700 रुपए। तो बेसिकली यहाँ पे आप स्पॉट माइनस फ्यूचर्स करेंगे तो पहले जो जीरो है वो आगे जाके स्ट्रेंथन होके 300 रुपीज के लेवल पे आ गया, 7,000 माइनस 6,700।
तो अगर आप एक शॉर्ट हेजर को देखेंगे तो चूंकि स्ट्रेंथन हो रहा है बेसिस, तो वहां पे शॉर्ट हेजर को बेनिफिट मिलेगा। तो एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि एक शॉर्ट हेजर ने स्पॉट को बाय किया हुआ है 6,500 रुपए के लेवल पे और फ्यूचर्स को सेल कर दिया सेम पॉइंट ऑफ टाइम 6,500 में। स्क्वायर ऑफ जब किया उसने अपना पोजीशन को, तो 6,700 रुपए के लेवल पे उसने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया फ्यूचर्स के अंदर में। बट अपना स्पॉट मार्केट के अंदर में अपनी उस कमोडिटी को जो 6,500 में खरीदा था उसको 7,000 रुपए के लेवल पे सेल किया। तो बेसिकली स्पॉट मार्केट के अंदर में उनको 500 रुपए का फायदा हुआ, और वहीं पे क्योंकि उन्होंने फ्यूचर्स के अंदर में शॉर्ट पोजीशन लिया था और मार्केट वहां पे बढ़ गया है, तो वहां 200 रुपए का लॉस हुआ 6,500 से 6,700 तक का। पर उधर स्पॉट मार्केट में 500 का बेनिफिट मिला, तो अफेक्टिवली उनको नेट गेन जो हुआ बेसिस मूवमेंट से वो 300 रुपीज का बेनिफिट मिल गया। और अगर बेसिस कहीं पे मूव नहीं किया होता, तो चूंकि दोनों के बीच में बेसिस जीरो था, तो ये पूरा पोजीशन में अगर लेट से स्पॉट मार्केट भी 6,500 था और वो जब स्क्वायर ऑफ के टाइम में एक महीने बाद में 7,000 हुआ, और अगर फ्यूचर्स मार्केट भी 7,000 रुपए में होता, तो दोनों मार्केट में अफेक्टिवली नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो है वो इक्वल होता कि फ्यूचर्स से उसको नेट लॉस होता 500 रुपीज का, और स्पॉट मार्केट में 500 का बेनिफिट होता। तो बेसिकली वहां पे कह सकते हैं कि उनको जीरो प्रॉफिट लॉस रहता ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ बेसिस। तो हमने जो अपना एग्जाम्पल में मान के चला था, जो पहले शॉर्ट हेज और लॉन्ग हेज के एग्जाम्पल में हमने यही मान के चला हुआ है कि वहां पे कोई बेसिस का मूवमेंट नहीं हो रहा है। बट इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन और प्रैक्टिकल मार्केट ऐसा बहुत कम होता है। देर इज अ मूवमेंट इन बेसिस, और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं दे हैव टू ट्रैक डाउन सॉरी बेसिस मूवमेंट और हिस्टोरिकल पैटर्न, और या फिर करंट मार्केट सिचुएशन, इस साल का क्या अपना सिचुएशन है, उस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर में प्रोडक्शन कितना है, या उसके आसपास की विसिनिटी के अंदर में प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितना है, और वहाँ का अवेलेबिलिटी कैसा है, वहाँ से रॉ मटेरियल का डिमांड कैसा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग विच डू इम्पैक्ट ऑन अ बेसिस। इसका अपोजिट एक एग्जांपल वीकनिंग ऑफ बेसिस का हमने लिया हुआ है यहाँ पे, कि जहाँ पे अगर अगर बेसिस वीक हो रहे हैं, तो वहां पे शॉर्ट हेज जो है, शॉर्ट हेज को वो नेगेटिव उसमें आएगा, मतलब उसको लॉस होगा शॉर्ट हेज वाले को। तो ऑब्वियसली वहां पे फिर लॉन्ग हेज वाले को उतना प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली शॉर्ट हेज वाला हमेशा चाहता है कि बेसिस स्ट्रेंथन हो, और लॉन्ग हेज वाला चाहता है कि बेसिस वीक हो वहां पर। तो ये भी जैसा पहले एग्जांपल में हमने लिया हुआ था जहाँ पे स्ट्रेंथन हो रहा था बेसिस, वैसा इसका अपोजिट यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। तो अगर बेसिस से हम लोग टेक अवेज लेना चाहें, तो जब बेसिस स्ट्रेंथन हो रहा है तो वहां पर शॉर्ट हेजर को, या फिर कह सकते हैं कि जिसके पास में फिजिकल कमोडिटी है और उसने फ्यूचर्स में एक शॉर्ट पोजीशन लिया हुआ है, उसको एडवांटेज होगा बिकॉज ऑफ बेसिस। वहीं पे लॉन्ग हेज वाले को इस सिचुएशन में लॉस होगा। और अगर बेसिस वीक होता है तो वहां पे शॉर्ट हेजर को लॉस होगा, और बट वो लॉन्ग हेजर को बेनिफिट करेगा। मैंने ऑलरेडी बोला कि आपको नॉर्मली बेसिस रिस्क जो है वो प्राइस रिस्क से काफी कम होता है इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। लेकिन अगर ऐसा कोई सिनारियो है जहाँ पे बेसिस रिस्क ज्यादा हो जाए प्राइस रिस्क से, तो वहां पे जो हेजिंग, अगर किसी ने हेजिंग टेक्निक या हेजिंग को यूज किया हुआ है, दैट कैन गो हेवियर। और अगर हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ट्रेडिंग टेक्निक्स की बात करें, तो वन कैन हेज देयर प्राइस रिस्क बट कैन नॉट, देयर इज नो वे टू हेज देयर बेसिस रिस्क। तो ये एग्जांपल में देखिए 2017 से लेके 2020 तक का प्राइस मूवमेंट दिखाए हुए हैं। आप इसमें देखिए कि प्राइस मूवमेंट जो है अप्रोक्सीमेटली 3,000 का लेवल दिख रहा है आपको। वहीं पे आप बेसिस का मूवमेंट देखिए तो दैट इज फ्रॉम लोअर साइड टू हायर साइड इज अराउंड 500 रुपीज।
तो बेसिकली हम, जैसे मैंने बोला, प्रैक्टिकल सेंस में या प्रैक्टिकल सिनारियो में बेसिस रिस्क हमेशा बहुत छोटा रिस्क रहेगा, बट प्राइस रिस्क बड़ा रिस्क रहेगा। एंड वन हैज टू हेज, यूज द हेजिंग टूल्स और हेजिंग टेक्निक to manage their or to have a proper risk management for their price risk. So here we come to end of our session. If the participants have any doubt or any questions, any queries with regard to anything in hedging, they can write down their query in Q&A tab that is in a left hand panel of your laptop or desktop. You can write down your questions or queries in Q&A tab. I think there are no queries or no questions from the participant side. So here we closes our session, and very thanks to all the participants to join this session. We here we closes our this session. Thank you all. Good evening.